under Indian Constitution and case laws. The Indian Constitution um, is amongst the few in the world that contains a specific provision on environmental protection. The chapter's directive principles of state policy and fundamental duties are explicitly enunciated the national commitment to protect and improve the environment. It is the first time when responsibility of protection of the environment is imposed upon the states through Constitution 42nd Amendment Act 1976. Article 48A. The provision for the states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. The amendment also inserted mm, part 6A, fundamental duty in the Constitution, which reads as follows. Article 51AG. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, and wildlife, and to have compassion for living creature. तो दोस्तों हम लोग इन्वायरमेंट वातावरण प्रकृति को बचाने के लिए हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे भारत में क्या क्या कानून है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. And this principle is applied by the court's honorable judges V.R. Krishna Iyer, P.N. Bhagwati, Kuldeep Singh, H.R. Khanna, who recognized third generation rights, environment rights as a constitutional mandate and applied it. Municipal Council, Ratlam versus Vardhi Chand and others. 30. The Supreme Court identified the responsibilities of the Municipal Council. Towards environmental protection and developed the law of public nuisance in the Code of Criminal Procedure as a potent instrument for the enforcement of their duties. Environmental protection and developed the law of public nuisance in the Code of Criminal Procedure as a potent instrument for the enforcement of their duties. When the case came before the Supreme Court, Justice V.R. Krishna Iyer made a thorough examination of the two main issues: the municipal legislation, which cast a duty on the municipality to maintain clean road and clean drains, and the provision of the Section 188 of the IPC 1860, which prescribed punishment to a person contravening the direction of the magistrate. According to Justice Iyer, the imperative tone of the provisions demands a mandatory duty. When an order is given under Section 133 of the CRPC, the municipality cannot take the plea that, notwithstanding the public nuisance, its financial inability validly exonerated it from statutory liability. Further, the court held that the processes that are envisaged under Section 133 of the CRPC have a social justice component. The remedies available and the powers exercisable under the provisions are conducive to the demands of the rule of law necessitated by conditions of developing countries. In Krishna Gopal versus State of Madhya Pradesh, the Madhya Pradesh High Court has gone one step forward and ordered the closure of factory, even though the contention of the defendant was that the inconvenience to the inmates of a house is not a public nuisance.
but only private in nature. The High Court observed it is not the intent of the law that the community as a whole or large number of complainants should come forward to lodge their complaint or protest against the nuisance. That does not require any particular number of complainants. A mere reading of Section 133(1) of CRPC would go to show that the jurisdiction of subdivisional magistrate can be invoked on receiving a report of a police officer or other information and on taking such evidence, if any, as he thinks fit. These words are important. Even on information received, the subdivisional magistrate is empowered to take action in this behalf for either removal or regularizing a public whose manufacturing factory is injurious to health and physical comfort of the community and dismissed the revision petition filed by the defendant. In Malvi versus Thalkan, the Kerala High Court upheld the order of the magistrate under Section 163 CRPC against the nuisance created by the automobile workshop in a residential area. In Ajit Mehta versus State of Rajasthan, Section 133 CRPC was very much recognized by the Rajasthan High Court, and the court upheld the order of the magistrate in removal of uploading, and stocking of fodder business near a residential locality causing serious health hazard. In Pranav Kumar Chakrabarti and Mohammad Akram Hussain, the Guwahati High Court decided that with the help of an order under Section 133 CRPC, a landlord could not evict a tenant. The court further said that magistrate must satisfy himself in an objective manner in finding out whether there is nuisance or likelihood of nuisance. When every citizen owes a constitutional duty to protect the environment, Article 51A, the citizen must be also entitled to enlist the court's aid in enforcing the duty against recalcitrant state agencies. The court gave the administration 6 months to clean up the entire city and dismissed the plea of lack of funds and staff. Article 246 of the Constitution divides the subject areas of legislation between the Union and the state. The Union list includes defense, foreign affairs, atomic energy. केंद्र सरकार किन किन चीज़ों पे कानून बना सकती है उसके बारे में कह रहे हैं कि दो सरकार होती है ना, केंद्र सरकार और राज्य की सरकार। एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं। इंक्लूड्स डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, इन सब पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, मोदी सरकार। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, एयर ट्रैफिकिंग, ऑयल फील्ड, माइंस, इंटर स्टेट रिवर्स। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री किन किन चीज़ों पे कानून बनाएंगे। द स्टेट लिस्ट 2 includes public health, sanitation, agriculture, water supplies, irrigation, drainage, fishery. द कंकरेंट लिस्ट, जिस पे दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की कानून अगर केंद्र सरकार ने बना रखा है तो राज्य सरकार का लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ने बना रखा और केंद्र सरकार ने फिर कुछ बना दिया तो केंद्र सरकार वाला लागू होगा। Under which both state and union can legislate includes forest
protection of wildlife, mines and minerals, and development not covered in the Union list. Population control and factories. From an environmental standpoint, the allocation of legislative authority is an important one. Some environmental problems such as sanitation and waste disposal are best tackled at the local level. Others like water pollution and wildlife protection are better regulated uniform national laws. 253 empowers Parliament to make laws implementing India's international obligations as well as any decision made at an international conference, association, or other body. Article 253 states, notwithstanding anything in the foregoing, from this chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India, for implementing a treaty, agreement, or convention with any other country or countries, or any decision made at an international conference, association, or other body. The Tiwari Committee in 1980 recommended a new entry on environmental protection be introduced in the concurrent list to enable the centre to legislate on environmental subjects. As there was no direct entry in the seventh, enables Parliament to enact comprehensive environmental laws. There was no direct entry in the seventh schedule, enables Parliament to enact comprehensive environmental laws. The recommendation, however, did to consider Parliament's power under 253. Article 14. The state shall not deny to any person equality before the law, equal protection of laws within the territory of India. The right to equality may also be influenced by government decisions that have an impact on environment, and arbitrary action must necessarily involve in the negation of equality. Thus, urban environmental groups often resort to Article 14 to quash arbitrary municipal permission for construction that are contrary to development regulations. Thus, urban environmental groups often resort to Article 14 to quash arbitrary municipal permission. क्योंकि आर्टिकल जो समानता का अधिकार है उसके हिसाब से शायद ये है कि लोग कहते हैं कि जैसे एक ही एरिया में सारे फैक्ट्री क्यों लगेंगे, जैसे गरीबों के एरिया में फैक्ट्री ज़्यादा लग गए हैं तो वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगी, तो वो बोल सकते हैं ना कि हमारे साथ समानता क्यों नहीं किया जा रहा है, इसी जगह पे ज़्यादा फैक्ट्री क्यों लगेंगे। तो जो शहर में ज़्यादा फैक्ट्री लगते हैं तो वो म्यूनसिपैलिटी को बोलते हैं कि क्यों आप, ये आर्टिकल समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 आर्टिकल 32
भारत के संविधान में हमारे संविधान मतलब जो नियम कानून जो देश का जो देश में जो जिस नियम से सब कुछ चलता है, तो उसमें संविधान, विधान मतलब होता है कानून, विधि, विधान, विधि विधान बोलते हैं ना। तो ऐसा विधान जो सब पे लागू हो समान रूप से पूरे देश में, समानता के साथ, सम व्यवहार के साथ। सम मतलब होता है ना सम विषम, जो बिना किसी भेदभाव के, जो सबके साथ, जो सबके ऊपर समान रूप से हो, तो और जो उसी को, तो उसमें हमारे इन पर्यावरण के बारे में, वातावरण के बारे में ऐसे कौन कौन से नियम कानून हैं जो वातावरण को सुरक्षित करते हैं, उनके उनके लिए बनाए गए हैं कि वातावरण के लिए कैसे उनकी सुरक्षा करनी है। तो वही देख रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर्टिकल 21 डिसेंट आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, वो जीवन का अधिकार की बात करता है। तो जीवन के अधिकार में स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, ये सब का अधिकार होगा तभी तो जीवन का अधिकार होगा। जीवन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें फिर होनी चाहिए, तभी तो जीवन होगा। तो आर्टिकल अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के जीवन का अधिकार है। तो उसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पानी, हवा, वायु, स्वच्छ झरने, नदी, नाले, ये सब आ जाते हैं, उसमें होने चाहिए। तो इसमें बहुत कम दिया है, कैसे देखा जाए। अहमदनगर जिला में मराठा विद्या प्रसारक समाज, न्यू लॉ कॉलेज, अहमदनगर, एनवायरमेंटल लॉ। ये वाला आएगा मेरे टेस्ट में। 10 तारीख को मेरा टेस्ट है, परीक्षा है 10 नंबर का क्लास में। उसमें एक टॉपिक ये आएगा कि संविधान में इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं।
Environmental Law Indian Constitution of India selected provision Annex 7 Part 4 Article 37 ये ठीक है Duty of a State Part 4 of Constitution of India भारत के संविधान का में चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कि राज्य की सरकारों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं कि वो किस तरीके से क्या क्या उनके लिए निर्देश हैं कि वो क्या क्या काम करेंगे। तो वो भाग 4 में दिया हुआ है। पार्ट 4 of the Constitution of India contains the directive principles of a state policy. These directives are the active obligations of the state. They are policy prescriptions for the guidance of the government. 37 of Constitution limits the application of the directive principles by declaring that Article 37 of पार्ट 4 कहाँ से शुरू हो जाता है 12 से 35 तक वो है 36 में कुछ है 36 से शुरू हो जाता है शायद पार्ट 4 36 से 51 तक है भाग 4 में इतने सारे अनुच्छेद इस भाग में Constitution limits application and declared the principle shall not be enforceable by any court. Therefore, Article 37 of Part 4 limits the application of the directive principles by declaring that these principles shall not be enforceable by any court. Therefore, it is direct. If a directive is not followed by the state, its implementation cannot be secured through judicial proceedings. लेकिन वो डायरेक्शंस हैं फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है उनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जस्टिस के लिए कि इसकी मांग पूरी करो। On the other hand, these applications are fundamental norms of the country and it is duty of the state to apply these principles during the process of lawmaking. On the other hand, these principles are fundamental in the governance of the country and it is duty of the state to apply these principles during the process of lawmaking. Article 48 A protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. The states endeavor to protect and improve the environment and thus safeguard the forest and wildlife of the country. The Parliament had considerable debate over the wording of the draft Article 48A. Several amendments were moved in both the houses of Parliament. As M. Sirvai has correctly pointed out, Article 48A reflects an increasing awareness of people all over the world of the need to preserve the environment from pollution, especially in urban areas. Smoke, industrial waste, deleterious exhaust fumes from motor cars and other combustion engines are injurious to the health and well-being of the people and foul of welfare. The preservation of forest and their renewal by afforestation has long been recognized in India as of great importance both with reference to rainfall and to protect erosion of the soil by depriving it of forests which protect it. The preservation of wildlife is looked upon as necessary for the preservation of ecological balance. Article 48A rightly emphasizes on the fact that states should try not only protect but to improve the environment. Article 31E, 47 and 48A of the DPSP, Directive Principles of State Policy, have a definite bearing of environmental problems. They, by themselves and collectively, impose a duty on the state to secure the health of the people, improve public health, and protect and improve the environment. ये सारी चीज़ें इस पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं हेल्थ ऑफ द पीपल they by themselves and collectively impose a duty on the state to secure the health of the people, improve public health, and protect and improve the environment.
Environmental pollution may damage the monuments of national importance. The protection of which is a duty of the state under Article 49 of the Constitution. Article 49 of the Directive Principles of State Policy provides for the obligation of the state to protect monuments, places, and objects of national importance. और ताज के शुरू में from Article 49 which provided for Taj Mahal. A monument protected under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 58 from Harpoon Industrial Mission originating in and around Agra. 51C directs the state to foster respect for international law and treaty obligation in dealing with organized peoples with one another. Therefore, in view of the range of international treating law and treaty obligations in Article 51C, read to conjunction with the specific treaty provisions may also serve to strengthen the hands of pro-conservation judge. Part 4A Fundamental Duties of the Citizens. वहाँ पार्ट 6 लिखा था ना, वो मिसप्रिंट हो गया था, वो पार्ट 4 होगा, पार्ट 4A है जो हम लोग आधे घंटे पहले पढ़ रहे थे। 42वां संविधान संशोधन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिससे उस नाम से जाना जाता है, उसमें एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेज की गई थी। 1976 में जो संविधान संशोधन इंसर्टेड पार्ट 4 है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. This new part prescribes certain fundamental duties for the citizens of India. The sole article of this part, Article 51A, specifies 10 fundamental duties. Part 4 fundamental duties. Part 51 fundamental duties is the duty of every citizen of India. G. The Indian Constitution imposed a joint responsibility upon the state and every citizen of India to protect and preserve the natural environment. In the words of Ranganathan Mishra, Justice. Preservation of environment and keeping the ecological balance unaffected is a task which not only government but also every citizen must undertake. It is a social obligation and let it remain every citizen that it is his fundamental duty as enshrined in Article 51AG of the Constitution. After making reference to Article 48 and Article 51AG, the High Court of Himachal Pradesh concluded, thus there is both a constitutional pointer in the state and constitutional duty of preserve the sacred forest, flora, fauna, river, lake and other water resources of the country. The neglect or failure by avoid with the pointer. Betrayal of fundamental law which the state and indeed every Indian, high or low, is bound to uphold and maintain. The courts agreement time and again to both the state as well as citizens of the duties towards environment while deciding environmental issues by referring to Article 48 and 51AG of the Constitution. Fundamental right to wholesome environment. Part 3 Constitution contains fundamental rights and including Constitution long debates in Article 21 जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 32 right to livelihood as a vis-a-vis environment. The Supreme Court has recognized another aspect of the right to life enshrined in Article 21 of the Constitution, which is the right to livelihood. There is a great right to livelihood. There is a real chance to of clash of these rights, that is right to environment and right to livelihood.
as government's action to close down industrial units for protection of environment may result in loss of job, dislocation of poor workers, and might disrupt badly the lifestyle of people heavily dependent on such industries. The government action to close down industrial units and dislocation of poor workers. The right to livelihood has been recognized in the case of Olga Tillis versus Bombay Municipal Corporation. The court issued direction to the municipal corporation to provide alternative site or accommodation to the slum and pavement dwellers near to their original sites and to provide amenities to slum dwellers. आर्टिकल 14 के बेस पे भी कर सकते हैं इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट लॉ में आ जाएगा कि आपने किसी को मनमाने तरीके से म्यूनसिपैलिटी ने कोई इंडस्ट्री या कोई कुछ लगाने का आदेश क्यों दिया, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि समानता के अधिकार का ये भी मतलब होता है कि आप किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, पिक और चूज नहीं करेंगे। जैसे क्लास में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से एक ही बच्चा मुझे बहुत पसंद है, तो ये तो फेवरेटिज्म हो गया। उसी को वो करना, उसी जगह को चुनना, या मन माने जो मन हुआ वो कर देना। 10 में से एक ही आदमी क्यों पसंद है, तो ये तो मनमानापन हो गया, तानाशाही हो गया, दादागिरी हो गया, जो भी कह लो। तो असमानता हुआ, मतलब ठीक ढंग से आप व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो आर्बिट्रेरनेस मतलब जो मन में आया वो कर देना, तो वो भी आर्टिकल समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्टिकल 14 में जो आर्बिट्रेरनेस बिकॉज आई मीन एक्शन इज आर्बिट्रेरी not to deny equality for the possibility of condition having impact on the environment cannot be ruled out. And because of action and thus permission for contraction that is contrary to town planning regulation by the municipal authority may be challenged. May be invoked to challenge governmental sanction to projects having adverse impact on the natural environment and where such sanctions involve arbitrary considerations. गवर्नमेंट ने जो सैंक्शन दिया है किसी को, आर्टिकल 14 में भी इन्वोक टू चैलेंज गवर्नमेंटल सैंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। किसी प्रोजेक्ट को, किसी इंडस्ट्री को, किसी माइंस मिनरल्स जो प्रोजेक्ट लगते हैं, कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई कारखाना लगता है, तो उस प्रोजेक्ट को जो सैंक्शन दिया है आपने, उस सैंक्शन challenge governmental sanction to projects having adverse impact on the natural environment and where such sanctions involve arbitrary consideration. तो वहाँ पे भी आर्टिकल 14 का इस्तेमाल हो सकता है। ये क्लास में टीचर ने नहीं बताया था। आर्टिकल 1G, आर्टिकल 19(1)(g)
freedom of trade. The right of person carry on any occupation, trade or business. The freedom, however, is not control. The aggrieved industrialist may resort to Article 19 in case his trade or business interests are affected by the action of governmental agency in the name of environmental protection. As environmental regulation भाई सबको अपने ट्रेड करने का अधिकार है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर उसको मना कर दे कि आपके ट्रेड करने से इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, तो संविधान में तो लिखा है कि आप ट्रेड कर सकते हो। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको आने जाने की स्वतंत्रता है कहीं पे। हालांकि इन सब स्वतंत्रता पे कुछ कुछ प्रतिबंध भी हैं कि आप उन क्षेत्र में नहीं जा सकते जहाँ पे गवर्नमेंट ने जाने के लिए मना किया हो, या इस तरह के कुछ बात हो। तो आर्टिकल 19 as environment regulation grows more stringent and enforcement becomes environmental trust with the fundamental right to carry on occupation trade and fundamental right to carry on any occupation trade business. Various standards have been prescribed by the government for the discharge for different pollutants and estimation that every stringent role of Panchayat 73rd Act, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है 1901G में। Various standards have been prescribed by the government for the discharge of different pollutants, and industry may challenge a very stringent standard which cannot be complied with despite best efforts by available technology, if it is otherwise unreasonable. As environmental फंडामेंटल राइट एक व्यक्ति का इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट उसमें बैलेंस किया जाएगा कि दोनों के बीच में बैलेंस बैठ रहा है कि नहीं। ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है लेकिन बढ़िया है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था। रोल ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। आर्टिकल प्रोवाइड्स Article 43 provides for the establishment of intermediate and district level. Article 43 authorizes the legislature to state to endow the panchayat with such power and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self-government. The 11th schedule, along with other matters matters which are directly or indirectly related to environment, like 11th schedule, like agriculture, soil conservation, water management, watershed development, fisheries, social forestry, and farm forestry, minor forest produce, drinking water, health, sanitation, and maintenance of communities. संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था ना। अभी जो हमारे गांव में इलेक्शन होते हैं, पहले नहीं होते थे। 1960-70 के दशक, 1990 के 73वां संविधान संशोधन जब भी आया 1973 में 1992, तो उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था और म्यूनसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है, जिला परिषद, शहरों में म्यूनसिपैलिटी होते हैं, गांव में पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के पास भी अधिकार होते हैं किन किन चीज़ों का, बाउंड्री है, सॉइल के बारे में है, उन सब गांव के लेवल पे जो सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में फ़ैसला करने का। तो उसमें भी इन्वायरमेंट की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं। जैसे कृषि है, सॉइल कंजर्वेशन है, मृदा को सुरक्षित करने का, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, कि पानी को कैसे वो ठीक रखना है, जल निकाय, कुआं बनाया जाता है, उसके लिए फंड जाती है, मछली पालन, सोशल फॉरेस्ट्री,
farm forestry, minor forest produce, drinking water, health, sanitation, and maintenance of community assets. 12th schedule may be enumerated as follows. अब म्यूनसिपैलिटी वाले में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो urban planning including town planning, regulation of land use, water supply, public health sanitation, कंजर्वेंसी. लेकिन म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में ज़्यादा अधिकार पंचायत के पास हैं. ये मैं अलग से आपको ऐसे ही आपके साथ कह रहा हूँ. Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects. Provision of urban amenities such as park, ground. शहरों में पार्क होते हैं, क्रीमेशन ग्राउंड जहाँ पे वो क्रीमेट किया जाता है, दाह संस्कार की जाती है. एंड इलेक्ट्रिकल crematoriums, prevention of cruelty to animals, regulating slaughterhouses and tanneries. Tanneries क्या होता है? Thus, it is evident that the Constitution imposed the duty to protect and preserve the environment in all the three tiers of government: central, state, and local. आर्टिकल 32 है. पार्ट 4 DPS पे द स्टेट से economic system, children given opportunity. 48A, 49 protection of information, peace and security, fundamental duties, सारे duties दे रखे हैं. fundamental rights, equality, 19 personal liberty, article 32. Remedies for enforcement of rights conferred by this part. The right to move Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the rights conferred by this particular. The Supreme Court shall power direction orders and writs including the habeas corpus mandamus provision government and search whichever may be appropriate for the enforcement of the right any of the rights conferred by this one without prejudice the powers conferred by the Supreme Court by clause 1 and 2 Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of jurisdiction all or any of the powers exercised by the Supreme Court under clause 2. The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution. 43B, 43G, Constitution of Panchayats, power, authority and responsibility of Panchayats. दोनों पंचायत है. 43B, 43G. आर्टिकल 226 रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू सर्टेन रिट्स. लॉ ऑफ क्राइम एनवायरनमेंट. अब IPC में कौन कौन सा सेक्शन हुआ है, तो खैर इसको अभी यहीं तक रहने देते. सो आई वॉज ट्राइंग टू हमारे वातावरण के लिए हमारे देश में हमारे देश के कानून में क्या क्या प्रोटेक्शन है. उसमें मेरे क्लास में एग्ज़ाम होने वाला है 10 नंबर का क्लास टेस्ट. 30 नंबर जो टीचर्स के हाथ में होता है ना, तो उसमें से तो उसी के लिए पढ़ रहे थे. तो उसमें एक टॉपिक आएगा कि संविधान में और IPC में
CRPC में ये सब में संविधान को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या नियम कानून दिए गए हैं, और भी कुछ कुछ आ सकता है, क्या क्या जो जो मेन केसेज हैं MC मेहता वाले, ये सब वाले, वो सब पढ़ना पड़ेगा। और एक और टेस्ट 1/10 को है, एक 11 को है, कंपनी लॉ का 11 या 13 को, 12 को है क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का, उसका भी पढ़ना है। सॉरी गाइस टू डिस्टर्ब यू।